सामने की ओर खींचते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथ। So if I was not audible whenever मेरी आवाज नहीं आ रही थी, so you missed the point. But try and integrate, सांस को मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। This pose in Taaza, feel the weight at the center of the ball of the foot. लंबी गहरी सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हुए while exhaling, allow the hands to come down. सेकंड आसन, दूसरा आसन संपूर्ण आसन। आप सामने देखते रहे, आई शो यू फ्रॉम द साइड। सबसे पहले इजी ऑप्शन सब लोग कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नाउ पुश द हिप्स बैक, कमर सीधी जितना आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमर सीधी, शोल्डर्स पुल्ड अवे फ्रॉम द कंधे कानों से। नाउ पुश बैक, कीप द हिप ऑन फॉरवर्ड हियर। आपका टॉर्सो, आपका हेड पैरेलल टू द फ्लोर। This is easy option, जो आप सब कर सकते हैं। If you want to challenge yourself, आप इनकी सपोर्ट बताएं। आप सब स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, showing the sideways, so you see the correct option. Even more advanced option, जो दोनों हाथ सामने को, जो भी option आप किसी भी option में आपको जो भी option आप यूज करते हैं। महसूस करें कि जो भी आपसे लगे Yes sir, yes sir. All right. Sincere apologies again that I was not heard, the audio not working. So मैं कोशिश करूँगा बिना चिल्लाए जितना मैं audible हो सके. Apologies for that, but this is yoga happening, starting with accepting. All right. Third pose, तीसरा आसन, त्रिकोण आसन. Feet wide, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा वाइड, पंजे सामने की ओर देखते रहें. कमर बिल्कुल सीधी. अब एक हाथ कानों के पास, लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच, लेंथन योर स्पाइन, ब्रीथ. सांस छोड़ते हुए अलाउ द बॉडी टू फॉल टू योर राइट साइड और द ऑपोजिट साइड, जो भी आपने हाथ ऊपर करा है उसके ऑपोजिट साइड. लंबी गहरी सांस और छोड़ते जाएं. सांस छोड़ते हुए once you have found the pose,
naturally with awareness of the breath, with awareness of the movement. आपको सामने की ओर खींचते हुए, इधर खींचते हुए इनहेल करें और अपनी परफेक्ट लंबी गहरी सांस, दूसरा हाथ एक्सहेल करें टू द अदर साइड। लंबी गहरी सांस, कमर सीधी। कॉमन एरर है बॉडी ऐसे झुका, करें सीधा रखें। Once you have found a comfortable, not so difficult position, just breathe and allow. Relax. Every time you exhale, you find your body getting closer to the floor. फिर से सांस लंबी गहरी अप, सांस छोड़ते हुए हाथ और बढ़िया। यहीं पे त्रिकोण आसन का एक वेरिएशन जो लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते I'll give you ऑप्शन। तो सबसे पहले इजी ऑप्शन, हाथ यहाँ पे हिप पीछे पुश करें ऐसे। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखते रहे, I'll show you sideways how it looks like। पीछे की तरफ पुश करें, कमर सीधी जैसे हम संपूर्ण में किया था, पैर वाइड, अब हाथ नीचे ना कर सकते। नाउ इजी ऑप्शन इज राइट हैंड लीजिए और लेफ्ट नी को पकड़ें ऐसे, सांस भरें और हाथ दिस इज इजी ऑप्शन। Now, if you want to challenge yourself more, take the hand down and then stretch to the side. Stay wherever you are, whatever option you choose, you can do easily. Choose that and stay with it. Important thing, do not look for the end of the pose, but be with the pose. This is Trikonasana, medicine for the spine. Massages your internal organs when you breathe deep and relax. सांस छोड़ते हुए वापस कंफर्टेबल पोजीशन हियर। फिर से कमर चेक करेंगे, डाउन नहीं होनी चाहिए, कीप इट स्ट्रेट एंड देन पुश द हिप बैक, हैंड्स डाउन इफ यू कैन, अदरवाइज जस्ट हैंड दिस टाइम अदर साइड। इजी ऑप्शन। एडवांस। Stay there, stay there, stay there. Now, from here, with the hands here on the knee, and if you can, अपने पंजों को अंदर की तरफ मोड़ो, here, and push the hip back and relax the spine. For those who can, जो कर सकते हैं, hands down and come into Hindi squat position, which is this. If you can, if you can't, अगर ये मुश्किल है आपके लिए, then simply come into Balasana, child's position, child's position. If you can, in this squat position. दोनों elbows घुटनों के नीचे, हाथ जोड़े, hands pressed into heart center and lift your chest. Breathe, but do not try to breathe, else it becomes choke. Relax. Beautiful. So that's what they were standing pose. अब हम बैठ के आसन करेंगे। हाथ जमीन पर रखें, बैठें और पाँव सामने की ओर करें। ऐसे। Yeah.
कमर सीधा, बिल्कुल से जितना हो सके। इफ इट इज डिफिकल्ट, ताल का यूज करें और उसको बम के नीचे लगा सकते हैं। अदरवाइज कमर इज सीधा, just like that. Now to start with, hands का सपोर्ट लें और कमर को बिल्कुल लिफ्ट करें। कोशिश करें ऐसा महसूस करने की जैसे कोई आपके हिप नीचे पुश कर रहा है और गर्दन ऊपर की ओर। फीलिंग द लेंथ इन द स्पाइन। Once you have found the length, keep the back straight, but let go of the support of the hands. हाथी को छोड़ो, कमर सीधा। अब इस लंबी गहरी सांस कमर और लिफ्टेड और सांस छोड़ते हुए allow the body to collapse forward. जो भी आपका लेवल है, दिस इज एडवांस्ड ऑप्शन। या तो यहाँ रुके, अगर ये मुश्किल है तो हैंड्स हियर इन बैक। Whatever is your level, stay with this. Don't push, don't exert, just breathe in. Stay with the pose, stay with the pose. I'm going to check something. Stay with the pose, stay with it. यहीं से यहाँ से वापस आ जाए, हाथ पीछे, सेतुआसन, हील्स को जमीन में दबाएं, हिप को लिफ्ट करें और उठाएं। और दिस इज एन एडवांस सेतुआसन, द क्लासिकल पोज। अगर आपके लिए मुश्किल है, बेंड योर नीज एंड लिफ्ट द हिप। This is the counter pose. दो मसल्स हमने स्ट्रेच की, नाउ वी आर स्ट्रेंथनिंग देम। सांस छोड़ते हुए, गुड। नेक्स्ट पोज, अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन। I will show you two options, easy option, advanced option. So सबसे पहले easy option, आप सामने देखते रहे, I'll show you from the side. पाँव सीधे सामने की ओर, ठीक है, पश्चिमोत्तासन में था। तो अपना राइट लेग बेंड करें, राइट लेग बेंड करें और फुट को फ्लैट दूसरी लेग के, जो लेफ्ट लेग है उसके दूसरी तरफ ले आए। कोशिश करें आपका फुट फ्लैट फ्लैट। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को हक करें, दूसरा हाथ पीछे, कमर सीधा एंड टर्न होता है। कोशिश करते हैं हर इनहेलेशन में जो लेंगे और हर एक्सहेलेशन में। This is easy. Stay with this. Those who are practicing, stay with this. For advanced option, आप घुटना मोड़ सकते हैं, रखें, हक करें या फिर फाइन भी कर सकते हैं। Whichever is your option. Breathe. Relax. And again. वापस आ जाए। सेम दूसरी तरफ, इजी ऑप्शन और क्लासिकल पे यू चूज। So I'm now showing the classical way. I bend the knee, I place, I lift it, I hug it, hand behind, lengthen the chest, pull, stay with the pose. I'm going to move the screen a little. Stay with the pose and keep breathing. Stay with the pose.
Now this pose has benefits more than can be described. When you breathe deeply into it, your internal organs get gently massaged. So if you have problems, constipation, or other problems with the stomach, this pose is what you want to do. सांस छोड़ते ही बाहर आ जाए. दोनों पाँव एक्सटेंड. नाउ पाँव को सामने एक्सटेंड करें और धीरे से लेकर कमर सीधा, पाँव थोड़े खुले, हाथ खुले और रिलैक्स. ध्यान बार बार बाहर जाएगा. What's happening? What is this problem? When is it ending? What I'm going to do after that? But bring it back to the breath, because breath is always happening now. If you bring it back to the present, there's one conscious breath is all required. Bend your knees. इसलिए मोड़े. हाथ नीचे. चेक करें आपके हाथ आपके पेड़ियों में टच कर रहे हैं. सांस भरते हुए पहले बम लिफ्ट करें, फिर बैक, होल्ड द ब्रेथ. दिस इज मॉडिफाइड चक्र. मॉडिफाइड. Easy option for chakra. This everyone wants to do. Great physical benefits. Also increase the venous blood flow back to the head. Good for conditioning as well. Those who can do it easily, do it. Those who want to challenge, अगर आपको advanced option चाहिए, so you can try full chakra. If you want, दोनों हाथ कंधे के नीचे, लंबी गहरी सांस, and off the floor, hold it. Option आपके पास. Whatever you can do easily, but do not exert too much. सांस छोड़ते हुए. दोनों पाँव खुले हुए. यहीं से हम चलेंगे फिश पोज. इसमें मोड़े. अब की बार पाँव एक साथ. हिप लिफ्ट करें. अब important thing is you want to place your hands like this in such a way, हाथ ऐसे रखें कि आपकी elbows से ऊपर से ना देख सके. So keep the elbows together. Inhale करें. Exhale करते हुए drop them on your hands. पाँव extend. Inhale करें. पंजों की ओर देखें. Inhale करें. Open the chest. Exhale करें. Drop them. लंबी गहरी सांस लो. सांस भरते हुए लिफ्ट करें चेस्ट को, शोल्डर्स को पीछे खींचे. सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे. सांस लेते हुए फिर से पंजों की ओर देखें. सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए. Feet wide, arms wide. Allow the body to relax. Relax. धीरे से घुटने मोड़ें और टर्न करें टू द साइड. Two poses of back bending. Now, generally in the gyms, we train the core, and with core we think it's the abs, but it is not. There are the 30 muscles that hold the spine together. 30 muscles, small muscles.
And the back part जो generally weak हो जाता है because of excessive sitting or bad posture or phone these days, so this needs special attention. So everyone, पाँव सामने खुले हुए, चिन नीचे, सांस भरते हुए, एक पाँव ऊपर all the way, अर्धशलभासन. If you can, दूसरा घुटना बेंड करें और उसको support करें. लंबी गहरी सांस. आपका हिप अगर टिल्ट करे तो ब्रिंग इट टू द सेंटर. अब ये पाँव ऊपर ही रहेगा. The support will go off. ये ऊपर है. Now you can feel the strain on the hip, lower back region, strengthening the area. With exhalation, allow it to drop. इसी तरह दूसरी तरफ inhale करते हुए, exhale करते हुए. Now you see my hip is tilting to the side. This is wrong. So bring it to the square position and down, chin in front. Lambi gehri सांस. It stretches the hip flexors and bring more mobility to the pelvic region. ये नीचे, दूसरा पाँव ऊपर, allowing it to strengthen. सांस छोड़ते हैं, पाँव में. हाथों का पिलो बनाएं, रिलैक्स करें, allow the back to offload to relax. गर्दन नीचे, big toes touching, knees away. Now, classical pose without this, it's incomplete. कोबरा, भुजंगासन. तो सबसे पहले मॉडिफाइड कोबरा, तो सब लोग कर सकते हैं. एल्डरली, सीनियर्स, जिनको योग का अभ्यास नहीं भी करा है, वो भी कर सकते हैं. देखिए, चेक करें, एल्बोज को कंधों के नीचे और कंधों को कान से दूर खींचना. यहाँ, दिस इज मॉडिफाइड कोबरा. कंधे कान से दूर, गर्दन लंबी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Stay here if you are new to this, or if you find it's too difficult. If you can, try the classical pose. चिन नीचे, हाथ कंधों के नीचे, कंधे कानों से दूर, सांस भरते हुए अप, सांस भरते हुए. Now ये देखिए, this is the classical pose. Common mistake, common error is this. That's not what you want to do because nothing's happening. Keep it here, shoulders down, chest lifted, and straight. Breathe. Feel the tension in the back and stretch in the abdominal area. If you really want to challenge yourself, take the hands off the floor. Breathe. This is the pose you can do on a regular basis to strengthen your spine and keep it erect. Now push yourself up and come into child's pose, Balasana. Generally, people do it with knees together. I suggest आप अपने घुटने खोलें, पुश करें ताकि पेट को जगह हो नीचे आने का. हाथ में, chin सामने, so you can push your chest down. Stay, looking at the mirror, at the screen. Yeah. Allow your back to relax and stretch. धीरे से lift up. Stay. Now, you can sit in Vajrasana. From asana to pranayam we are transiting. So आप वज्रासन में बैठ सकते हैं और आप सुखासन में बैठ सकते हैं.
और अगर आपको 10-15 मिनट बैठना है और जमीन पे बैठना डिफिकल्टी है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं. बट आई एम प्रेफरिंग टू सिट हियर. I have a pillow, you may have a cushion or something. Place it under the bump so the back is erect. Kamar erect, not tense. If you have a sanitizer bottle with you, if I have one, you place some, you clean your hands as we are going to touch our face. Kamar seated, whichever position you choose. If I'm not heard properly, you can keep the eyes open. However, I'm trying to make myself audible. अगर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप तो आंखें खुली रखें और देखें. पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन. Common error is too much of force. This is nadi shodhan. We don't want force. Do it easy. Breathe without the sound. Breathe without the sound. Alternate nostril breathing. Try करते हैं. Right hand Vishnu Mudra. Left hand Chin Mudra. Right hand easy. Inhale. Exhale. कोशिश करें जितना हो सके उतना स्लो ब्रीथ करने का. फिर से इनहेल करें, फिर से एक्सहेल. Keep doing. Once you're doing it, your breath becomes slow. So follow the speed of your own breath. Try and do it without the sound. No force. अब इनहेल करेंगे और रोकेंगे. फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे दूसरे नोस्ट्रिल से. फिर इनहेल करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे. जितना सटल हो सके, जितना सूक्ष्म, धीरे, बिना प्रयास के. अपनी स्पीड फॉलो करें. और छोड़ो. Bring your attention only in watching. Watching without commenting, watching without judging. Just be aware of how you feel. आप क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में सजग रहें. बिना प्रयास के दूसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी. Let me bring this closer. Hopefully the sound will be clearer. दूसरा प्राणायाम भ्रामरी. If you can hear me, very good. If you can't hear me, just watch me. So here it involves two processes. Breathing through the nose, I inhale first and then I make a sound, nasal sound. देखें, कोई भी करे मत, सिर्फ देखें. पहले देखें. कान ऐसे बंद कर सकते हैं या ऐसे बंद कर सकते हैं. जो भी you can do easily. Okay?
I prefer this way. लंबी गहरी सांस नाक से और नाक से आवाज फिर से ट्राई करेंगे. लंबी गहरी सांस नाक से आंखें बंद रखते हुए. आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे, और नाक से छोड़ेंगे सांस धीरे से ध्वनि के साथ, साउंड ऑफ ऑल राइट. नंबर 2, if you're new to this practice, अगर आप पहली बार कर रहे हैं या new to this practice of Brahmari, keep the teeth together. Teeth clenched, you'll get better vibrations, you'll feel it more, and eventually you'll become subtler and subtler in the practice. Let's try it together. 5 बार एक साथ करेंगे. If you can hear me, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, then keep the eyes closed, आंखें बंद रखें. अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो आप आंखें खोल सकते हैं. Important now is to refrain from any internal commentary. Just stay with what you feel. Just stay aware. सिर्फ सजग रहें. Aware of whatever you perceive. If your eyes are closed, then you are aware of your hearing sensation. You can feel on the skin, the air, the wind, whatever. There can be some feelings inside that you can feel. Just be aware, but do not comment about it. Just know them. In Bhagavad Gita, chapter 2, Krishna speaks of something in English called field, kshetra. There are 2 levels of awareness. One is the awareness of the field, kshetra. Kshetra is field, is what you can perceive. This body, whatever you can perceive through the senses, through the eyes, ears, through the brain, you can perceive the thoughts, feelings, sensations. Whatever you can perceive outside or even internal is the field, kshetra. And दूसरी बात कृष्ण करते हैं, that is called kshetragya, knower of the field. And he speaks, common man
is only aware of the field and sometimes not even aware of the field. सिर्फ वो क्षेत्र के बारे में जानता है, जो दिखता है, जो महसूस करता है, जो सोचता है, उसको लगता है यही सच है. But a yogi is also aware of the kshetragya, of the witness as well. A yogi, a wise man, for example, Saint Francis of Assisi, a Christian mystic, used to say, the place you are looking for, जिस जगह को आप ढूंढ रहे हो, the place you are looking for is the place you are looking from. But you do not know what is looking from you. Same thing. Your awareness is always on what you perceive, what you think. But right now, it requires no effort, no concentration, no meditation, no voodoo magic. Right now, you hear me, you hear sounds, but can you also perceive who is hearing? Can you be aware of who is hearing? If your eyes are open, or you perceive from the skin, touch, who is beyond the eyes? Who is watching through the eyes? Because eyes are there in the dead body also. They don't see. Which means eyes is an object that you use to see. But who is watching through the eyes? Now. Just inquire now. That way, with your senses all open and alert, you are aware of the field, you're aware of your thoughts, but you're also aware of the kshetragya, of the witness of the field, of the knower of the field as yourself, as Atma, which means the self. And this you can experience right now when whatever you see or think or perceive, you are not totally drawn into it. You see it, yes, it's there, but you're also aware of the deeper dimension, the changeless dimension, the changeless witness. That doesn't change with the changing perception. All it requires is your attention here and now. And now. And if a thought comes, when is it going to end? And if a thought comes, anxiety or whatever you feel, you are aware of it. Don't believe it totally. Because the moment you believe, you become a slave of that thought. You become a slave of that feeling. But if you are aware of who is believing, that's undefinable, beyond description. The witness, the now, this moment.
this moment. Time doesn't exist then. Because all then you realize, you know it, that all you ever have is this moment. Ever this moment. And when you're rooted in this moment, when you're not looking forward to the future for satisfaction, then whatever you do, your action is imbued with quality and skill. Your action is imbued with quality and skill. Because your attention is in the doing, not in the deed, in the doing itself. And that's what Krishna implied, as I said in the starting. Skill in action is yoga. Skillful action, not the selfless action, which will enhance me tomorrow. Now, I'm poor as it is, as this moment now. Requires no effort. Just simple observation without the observer. So, as much as possible during the day, be consciously aware of your senses, what you see, hear, feel, and be aware also of who is aware. Inquire. Let me not tell you. Let not anyone fool you or give you a belief to believe in. Find out for yourself. Inquire and find out for yourself. What am I beyond this form, beyond this thought, beyond this petty name? What am I in my essence? And that will be the truth of yourself, for yourself. Thank you very much. I thank you, all the participants, the sponsors, BIR India, developing indigenous resources who are helping, creative entertainment, 93.5 FM, Alcis Sports, Policy Bazaar, and our other partners and sponsors who made it happen, and all of you who participated in it, gone with us, the soundless class. Thank you very much. Stay as much as possible here and now. Do not think of your end with some disease or whatever, because end never comes. The mind makes you believe that so. If you believe you're the body, you will be scared. You want to preserve this forever. But if you know yourself beyond the body, then you use this body freely without fear. And that's the essence of yoga. Freedom. Freedom from the known. Freedom from the field of the known. Thank you all.